देखो सुनो, क्या एज है उनकी, बुजुर्गों की? उनको क्यों तंग कर रखा है? अपनी जगह ढूंढो कहीं और। सर मैं कहाँ जाऊँगा? कहाँ जाएगा? उनके हाथ पैर जोड़ के रखो फिर। एक तरफ धींगा मस्ती करते हो, दूसरी तरफ आप वहां पे रह रहे। 3 साल सुनो, अब दोबारा फिर बोल रहे हैं टाइम बताइए, नहीं तो आज ही आपका सामान उठवा के बाहर पहुंचे। क्या इश्यू है ये? Milos, the issue involved in this case, Milos, because the appellant is a former son-in-law, Milos. He married to the respondent number 3 daughter, Milos. अच्छा, ये वो दामाद और वो जी सर, Thereafter, Milos, he is my आप son-in-law. क्या करते हैं? आप क्या करते हैं? हैं? मजदूरी कर। ये घर किसका है? रजिस्ट्री उनके नाम से है, बाकी जो हमने ऑप्शन में मकान निकला था बैंक से, उस समय हमने खरीदा। ये ऑप्शन, इसमें ऑप्शन में लिया है जी, बैंक से? बैंक से कब खरीदा आपने? 2007। पैसे किसने दिए थे? मेरे पास उस समय मेरे पास उतनी मेरी वो नहीं थी हैसियत किसने दिए थे? पेमेंट के लिए। किसने दिए थे पैसे? पैसे किसने दिए थे? पैसे मैंने पहले तो उन्होंने दिए, फिर मैंने उनको धीरे धीरे करके मैं देता गया। किन्होंने दिए पहले? नारायण मान। आपके ससुर ने? जो उन्होंने पैसे दिए? जी, रजिस्ट्री आपके नाम है उनके नाम है? उनके नाम। तो फिर आपका क्या राइट है इसमें? सर हम वहाँ पे जब रहते थे उन्हीं के पास में। देखो सुनो, क्या एज है उनकी, बुजुर्गों की? उनको क्यों तंग कर रखा है? सर मैंने तो पेमेंट उनको देता गया। पेमेंट कहाँ से देता? दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। पेमेंट किसे? चेक से दिया? चेक से। चेक से दिए? कितने पैसे दिए दिखाओ, पेमेंट दिखाओ कितने। there is a one proof, Milos. कितने पैसे दिए दिखाओ। Milos, 1 lakh rupees का ट्रांजेक्शन है, बाकी कैश में दिया, ऐसे ही कैश में दिया। जब ये करता ही कुछ नहीं तो कैश कहाँ से दिए इसे? और ये हाँ? मजदूरी करके धीरे धीरे कितना टोटल अमाउंट दिया आपने? करीब करीब 2 2,70,000। 1 लाख का आपने चेक दिया और बाकी 1,70,000 आपने दिए कैश से। बाकी अच्छा, पे काम कर रहा है। सॉरी, क्या कमाते हो आप पर मंथ? हर महीने कितने पैसे कमाते हो? 10-12 हजार। 10-12 हजार। ओके। बच्चे कितने हैं आपके पास? 2 नहीं, दो मेरे बच्चे हैं। बच्चे मेरे पास। अच्छा, आई एम मेंटेनिंग। ओके। तो 10-12 हजार में आप ये जो आपने 1,70,000 जो कैश दिया है, ये कितने दिन में दिया है? कितने दिन में? 2 महीने में, 1 महीने में, 1 साल में? कितने में दिया? मैंने तो धीरे धीरे दिए। कितने धीरे धीरे? 1 साल में, 5 साल में, 2 साल में, 20 साल में? 6-7 साल। 6-7 साल में दिया आपने। ओके। इनसे कोई रिसीट लिया आपने कि भाई मैं देखो ये पैसे दे रहा हूँ? जी नहीं, ससुर साहब है तो बाप के बराबर ही होते हैं, तब कैसे? तो अब ससुर साहब बाप के बराबर, ससुर साहब की आपने नींद आराम कर रखी है। रसीद क्या है सर? अपनी जगह ढूंढो, धीरे धीरे करके देता गया। अपनी जगह ढूंढो कहीं और। सर मैं कहाँ जाऊँगा? कहाँ जाएगा? उनके हाथ पैर जोड़ के रखो फिर। एक तरफ धींगा मस्ती करते हो, दूसरी तरफ आप वहां पे रह रहे। आपके नाम से है नहीं ये। आपने मैरिज कर ली? सेकंड मैरिज की? जी। तो मैरिज भी करनी है, रहना भी वही उन्हीं के घर पे है। उन्हीं से पूछा मैंने, उन्हीं से आज्ञा लेके मैंने शादी करी। नहीं, ये फिर ऐसा मत। मैंने उन्हीं से पूछा था। आप शादी की है, आप जो भी काम करते हैं आप अपने लीजिए कोई रेंट पे जो भी मकान है, छोड़िए इधर से। हाँ जाऊँगा सर। इस वक्त का कोई ये वक्त ऐसा थोड़ी है कि ना ही जा सकते, रेंट पे अवेलेबल है, वो किसी भी वक्त जा सकते हैं। टाइम कितना चाहिए बताइए आप खाली करने का? खाली मत करो। टाइम बताइए, टाइम कितना चाहिए? मैं कहाँ जाऊँगा सर, प्लीज। फिर वही बात है, हम पूछ रहे हैं टाइम कहाँ जाएंगे, वो तो आप ढूंढो ना कहाँ जाएंगे। किराए पे मिलते हैं ना सब कुछ। आप अपने किराया बांध दीजिए, वहीं पे रहेंगे। वो तो वो बताएंगे, किराया इनका लेना होगा। जो किराया यहाँ दे सकते हैं आप दूसरी जगह ले लो किराया। देखो सुनो, जहाँ बनती नहीं आपके, दिन रात आपकी टेंशन बनी है दोनों की, और वो बुजुर्गों को तंग कर रहे हैं आप, आपके नाम पे नहीं है, ठीक है? उन्होंने उस टाइम शेल्टर दी, लड़की की डेथ होगी उनकी, आपने दूसरी शादी कर ली, अब जाइए घाट से। तब रखा था उन्होंने तो आप इसमें घुसे, क्या राइट है आपका वहां पे? टाइम बताइए जरा कितना टाइम?
वैसे तो मैं कहीं खरीदूंगा, किराए से लेना पड़ेगा मेरे को, हाँ जब तो भी बनाऊंगा। हाँ ठीक है टाइम लगेगा। हाँ तो किराए पे तो ले सकते हो ना इमीडिएटली, किराए पे तो जाओगे ढूंढोगे मिल जाएगा किराए 5 या 10 दिन में। नहीं मिल पाएगा सर। हैं? मैंने सर उसमें मकान में पैसे भी खर्च करे। देखो मेरी बात सुनो, क्या खर्च कर दिए, जहां तक इसका एक का है, आपको अगर कुछ इनसे लेना है पैसा, आप उसके लिए केस फाइल कर सकते हैं कि मेरा पैसा इतना रहता है वो दो। ठीक है, जो आपने करना है। जहां तक इस मकान में है, अब इस मकान में आप गैर कानूनी तौर पे हैं, ये आपके नाम पे नहीं है। क्या एज है इनकी? 78. Today he's 78. 78। Today he's 78. Lord, he has taken care of both the children, not him. बच्चे आपके आपके पास है? बच्चे मेरे पास हैं। पहली जी हाँ, क्योंकि because he married the second lady, so both the children. टाइम बताइए। 2022 का इवेक्शन ऑर्डर है ये। 2 साल हो गए आपको। 3 सॉरी। बेटी तो सर इंदौर में। 3 साल सुनो, अब दोबारा फिर बोल रहे हैं टाइम बताइए, नहीं तो आज ही आपका सामान उठवा के बाहर फंसवाएंगे। ऐसे नहीं ले सकते कोर्ट को फॉर ग्रांटेड आप। 1.5 साल दे दी। 1.5 साल दे दिया, हो गया तेरा काम। 1.5 साल 1 महीने में खाली कर। 1.5 साल दे। सर बहुत चालाक है। 1.5 साल दे दो उसको रेंट पे ढूंढने के लिए। 1.5 साल लगेंगे। ये कहीं दूसरी जगह बनवा लूंगा। बना लेगा तो पहले किराए पे रहो, फिर उसको बना लेना जो बनाना है। उनकी परेशानी क्यों कर रखी है आपने? ये तेरा इम्प्यून मतलब मैं सबमिट ऑन मैरिज में लॉस बोलिए, नहीं तो हम इसको आपका बाहर रखवा देंगे सामान। हमने इसी करके आपको बुलाया कि ताकि आपसे पूछ लिया जाए, नहीं तो हम पिछली बार इसको डिसमिस कर देते। इसमें कुछ नहीं है आपके। बोलो कितना टाइम? सर टाइम तो दीजिए, ये वहीं पे किराए से वहीं ले लूंगा, मैं उनको किराया देता रहूंगा। आप सुनो, हम ये पूछ रहे हैं आपको 10 दिन, 15 दिन, महीना, इस बीच में आपको अरेंजमेंट करना है। यहाँ इसका नहीं लगेगा, नहीं तो आपका सामान हम ऑर्डर कर देंगे, आपका सामान उठा दिया जाएगा। ऐसा हम्म? ऐसा मत करिए। आपको ना करिए तो उनका करें। वो बुजुर्गों का आपने नींद हराम कर रखी है, कसूर कर रखा है आपका। आपके बच्चे तक वो पाल रहे हैं। नहीं सर, वो तो बच्चे तो इंदौर में हैं। कौन खर्चा देता है? तो आप नौकरी करती है सर, हम्म? नौकरी करती है। लोग- तो बेटा जो वो भी नौकरी कर रहा है। इनफैक्ट मतलब मैं सबमिट लॉस यस प्लीज। मिलोस देर आर मिलोस वन थिंग मिलोस, इनके बीच में कभी कंसिलेशन की प्रोसीडिंग्स हुई नहीं है मिलोस। अगर एक बार मैटर मिलो मीडिएशन के लिए भेज दिया जाए, भोपाल में भेज दिया जाए मिलोस, क्योंकि रीजन ये है कि उनका जो ग्रीवेंस था मिलोस, कहाँ रहते हैं ये? भोपाल में ही रहते हैं मिलोस। एक बार conciliation proceedings before the writ court हुई थी, and the parties did not agree. That is reflected in the order. ओके। It was not possible, Lord, मतलब because relations are very much strained. मतलब दूसरा मिलोस ये है कि मतलब कैंसिलेशन प्रोसीडिंग्स मतलब दोनों पार्टीज के बीच नहीं हुई थी मिलोस। आई वाज डायरेक्टेड टू सीक इंस्ट्रक्शन मिलोस हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड मिलोस। मतलब द सेकंड थिंग इज दैट मिलोस कि मिलोस इनफैक्ट जो रिस्पोंडेंट नंबर 3 का जो ग्रीवेंस है वो किराए की राशि को लेके ही है मिलोस। दैट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द कंप्लेंट व्हिच ही हैज मेड बिफोर एसडीएम कोर्ट मिलोस। एंड मिलोस जो जो मकान है ही इज लिविंग इन हिज हाउस मिलोस। इट इज नॉट द मैट कि दोनों दोनों एक ही घर में रह रहे हैं। उनका घर अलग है, इनका घर अलग है। ऊपर का जो पोर्शन है उससे 3,500 रुपए किराया मिल रहा है। अब 10,000, अब 10,000. हाँ मतलब जो भी मिल रहा हो मतलब मतलब अगर इनका किराया का अगर ये जो भी है मिलोस जो दे देते हैं तो मिलोस इनका भी ग्रीवेंस सेटल हो जाएगा। उनका भी जो मिलोस जो उनको किराए का जो उनकी मांग थी एसडीएम के सामने मिलोस वो भी फुलफिल हो जाएगी मिलोस। मिलोस रिट पिटीशन का मिलोस पेज नंबर 31 है मिलोस, जहाँ पे उनका आवेदन है पेज नंबर 31 पे रिट पिटीशन का ऑर्डर का। चलो आप इसमें डिस्कस कर रहे थे, टेक दो इस पर वो just note of the paper. The petitioner is son-in-law of respondent number 3. Stop. He was married to his deceased daughter. However, in an accident, wife of the petitioner died in the year 2018. Stop. The petitioner is living in the said house as a pervasive occupant and occurrent
and as submitted by the counsel for the petitioner that he cannot be evicted from the said premises. So, the learned tribunal, however, failed to allow the procedure of conciliation before passing an award. Stop. Even a relative, comma में करना relative, defined in section 2G of the Act 2007 will not include the petitioner. Therefore, petitioner being not covered under the provision of Act 2007 could not have been subject matter of any order under the provisions of the Act 2007. Stop. Further submitted that the petitioner has adverse possession over the property. Stop. He had contributed toward the construction of the house, and in support of this, he has enclosed copy of Annexure 3 to demonstrate that a sum of rupees 1 lakh was given in the account of Principal 3. Case of the said respondent, on the contrary, case of the said respondent is that firstly, order is under section 23 of the Act of 2007, which deals with transfer of property to be void in certain circumstances. It is not an order under any other provision. Stop. The children will include son-in-law because the definition is not comprehensive. Stop. In the fact, when property was given to the daughter of Respondent 3, then in a package, petitioner was inducted. Stop. Petitioner is not taking care of the senior citizen, and on the contrary, it's causing nuisance for them and has been mentioned in the application which filed by the Respondent 3 before SDM, MP Nagar Circle, Bhopal, and on account of that directions for evictions have been given. Stop. Stop. It is not in dispute that house was purchased by Respondent 3 in the year 2007, though petitioner contention is that since he was a laborer and facility of loan was not available to him, therefore he had purchased the house in the name of his father-in-law, but that is not borne out from any of the documents available on record. Stop. Moreover, there is no such agreement that house was purchased in the name of Respondent 3 because loan facility was not available to the petitioner. Stop. It is admitted fact that petitioner never moved any application before the STM for initiating conciliation proceeding. Stop. On the contrary, when the writ court had given an offer to the petitioner's counsel to seek instruction from jurisdiction that how much time is required to vacate the property in question, he in the password round informed the court that his instructions are that petitioner wishes to contest this case on merit and does not wish to vacate it. Stop. Though today also counsel for the petitioner submits, let the matter be posted before the mediator, however, which has been strongly opposed by the counsel for the Respondent 3. Stop. The learned single judge has observed in the impute order that provisions contained in section 2A of the Act 2007 defines children. Stop. The definition according to the definition according to the writ court is not comprehensive. Stop. Only talks about broader categories of persons, namely sons,
daughter, grandson, and granddaughter who are not minor. Stop. By implication, if the house was given to the daughter and the petitioner being a son-in-law, after death of daughter will be included in the definition of children, and he has duty to maintain the senior citizen as defined in section 2H of the Act 2007. So, the Elite Court has further observed that as far as a relative is concerned, that too will also not be of any consequence because there is it is not a matter of childless senior citizen. Therefore, the provisions which are paramateria to decide the controversy is definition of the children and that of senior citizen given retrospectively in section 2A and 2H of the Act 2007. Stop. Regarding the contention of the counsel for the petitioner, it is observed that provisions contained in section 23 of the Act 2007 will not be applicable because there was no transfer of property. It is to be understood that transfer of property is not to be understood in terms of transfer of immovable property as mentioned in the Transfer of Property Act. Stop. The transfer of property includes permissive transfer or gratuitous transfer in favor of person. And if the senior citizen is available to demonstrate his need, then that transfer can be declared as null and void in terms of provisions contained in section 23 of the Act 2007. Stop. In view of above, the writ court has rightly observed that when facts of the case are examined in the light of provisions contained in section 23 of the Act 2007, it is evident that petitioner is retired BHEL personnel. Stop. He has no provisions for any regular pension. Stop. There is no provisions for regular pension. Stop. Pension is granted through contributory provident fund. Stop. Respondent number 3 has categorically about that he has responsibility to take care of his wife and who is suffering from paralysis and other children. Therefore, he needs that property which was constructed by him so that he can have a source of additional income. Stop. Para. Undisputedly, the relations of petitioner with respondent number 3 is not cordial, then mere facet of income cannot be looked into, but a peaceful income giving satisfaction to the owner of the property who happens to be a senior citizen in another facet which is to be understood and embodied by implication while interpreting the provisions of section 23 of the Act 2007. Stop. When the whole facts of the case are examined from the said perspective, then there is a senior citizen, he is in need of property and that need is bona fide and for peaceful purposes, therefore, petitioner having failed to establish any of the rights of property is not entitled to continue in the property to host the order of subdivisional magistrate and the collector, magistrate and the collector. Stop. In view of above, the learned single judge rightly dismissed the writ petition filed by the petitioner. Stop. The eviction order is of dated 2nd May 2nd May 2022. 2522 P2.
almost 3 years have been passed. Relations could not be improved. Therefore, we hereby direct the petitioner to evict the premises within 4 weeks from today, 30 days ago, 30 days from today, failing which SHO concerned is directed to remove the article from the said house, make inventory and medical evidence and hand over to the petitioner. So, in view of petition.